Hello and welcome you all. Dear students, I am starting a new series for the subject electronic circuit. It is the subject for second year ENTC students. एक्चुअली इससे पहले मैंने सिर्फ दो वीडियो क्रिएट किए थे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड. दैट वीडियोज वेयर फॉर ओनली क्विक रिविजन. नाउ इन दिस सीरीज आई विल बी टीचिंग यू each and every topic in detail. So without wasting the time, let us start the session. So today's session is N-channel E-MOSFET. It is the topic from unit number 1 for the subject electronic circuits. MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistor. Broadly, there are two types of MOSFET. First, enhancement type MOSFET, which is abbreviated as E-MOSFET. Second is depletion type MOSFET, which is D-MOSFET. Again, in each category, मतलब MOSFET के दो मेजर टाइप्स है, एक इनहांसमेंट दूसरा डिप्लेशन. हर एक में फिर से दो दो टाइप्स है. वन इज एन चैनल, सेकंड इज पी चैनल. प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट एन चैनल ई MOSFET. अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से the question you may expect like this: draw the constructional diagram and explain it for n channel E MOSFET. तो ये जो डायग्राम है, दिस इज कंस्ट्रक्शनल डायग्राम फॉर n चैनल E MOSFET. ये डायग्राम बहुत सिंपल है. एक यहां पे मैंने लिखा है पी सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मतलब एक बेस मटेरियल, तो एक पी टाइप का बेस मटेरियल यूज किया है. डू रिमेंबर इट इज अ पी टाइप मटेरियल. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ होल्स आर मोर कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन अनदर लैंग्वेज, पी टाइप सबस्ट्रेट मतलब होल्स ज्यादा है, सो होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स. इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स. फिर यहां पे एट द अपर साइड एंड लोअर साइड आई हैव रिटन एन. मतलब ये जो सबस्ट्रेट है, इसके यहाँ का कुछ पोर्शन और यहाँ का कुछ पोर्शन कट करके ये जो एन टाइप का मटेरियल है, इट इज एम्बेडेड इनटू दिस स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर है पी सबस्ट्रेट. ये दो पार्ट कट करके यहाँ पे एक नया डोपेंट मटेरियल यूज किया है, दैट इज एन टाइप ऑफ मटेरियल. अब ये रेड पेन से जो मैंने बनाया है, दिस देन सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. दीज आर द मेटल कॉन्टैक्ट्स. जैसे देखो यहाँ पे फॉर अपर एंड डोपेंट मटेरियल एक मेटल कॉन्टैक्ट यहां पे कनेक्ट किया एंड वन टर्मिनल इज टेकन आउट. इट इज रेफर्ड एज ड्रेन टर्मिनल. यहां पे अगेन आई हैव क्रिएटेड वन कॉन्टैक्ट एंड वन मोर टर्मिनल इज टेकन आउट व्हिच इज कॉल्ड गेट टर्मिनल, बट इट इज नो वे इंटरनली कनेक्टेड. देन for the bottom n type of material, again one metallic contact is created and terminal is taken out. It is referred as source terminal. तो तीन टर्मिनल्स है in case of MOSFET. One is drain, second is gate, third is source. अब यहाँ पे ये जो लेयर बनाया है मैंने, दिस इज SiO2 लेयर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है. इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आंसर यू मस्ट राइट समथिंग रिलेटेड टू SiO2 लेयर. SiO2 स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर. ये इसका मेजर फंक्शन ये है. यहाँ पे देखो मैंने गेट टर्मिनल दिखा है विच इज नो वे इंटरनली कनेक्टेड. एक्चुअली हम लोग बाद में इसके ऑपरेशन में लर्न करने वाले हैं. ये जो दो एन टाइप का डोपेंट मटेरियल मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, इसके बीच में एक चैनल तैयार होता है. प्रेजेंटली आई हैव नॉट ड्रॉन चैनल इन दिस डायग्राम. सो टू आइसोलेट द गेट टर्मिनल फ्रॉम द चैनल which is created between the two dopant regions, n type dopant regions, this SiO2 layer is used. तो मेजर फंक्शन है आइसोलेशन प्रोवाइड करना है गेट टर्मिनल का फ्रॉम द dopant material, from the channel which is created due to dopant regions. Okay, one more important function of SiO2 layer is it provides very high input impedance. ये major characteristic है MOSFET का, due to which the size is getting drastically reduced. इसीलिए जो हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, in all such devices in integrated form MOSFET is used. All right, one more terminal is shown in this diagram which is called substrate and it is abbreviated as SS terminal. बहुत सारे MOSFET में ये चार टर्मिनल अलग से दिखाते हैं. In some MOSFET this substrate SS terminal is connected to source terminal and it is grounded. Okay, now this is the symbol of MOSFET. जैसे मैंने बताया तीन मेन टर्मिनल्स है, ड्रेन, गेट, सोर्स. So
This is the gate terminal. Upper one is drain terminal, lower one is source terminal. Look at the arrow. This is the symbol of N channel E MOSFET, so arrow is inward. I have written the function of each terminal in short. The source terminal, ऐसे याद रखना है, as the name indicates, source means it is providing something. So source terminal emits electron. This terminal emits electron. Drain terminal collects electron, because of which drain current flows into the structure. And gate terminal is the controlling terminal. मतलब gate terminal को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई देके we can control the drain current. That means we can control ID. Next part, you may expect the question, explain the working of N channel E MOSFET. देखो इससे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन लर्न किया है. नाउ लेट अस डिस्कस द वर्किंग. डायग्राम में चेंजेस क्या क्या किए मैंने. एवरीथिंग इज सेम. यहाँ पे एक चैनल दिखाया है. दीज आर प्लस चार्जेस, दीज आर माइनस चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. और इंपॉर्टेंट चेंज between gate and source, one voltage source is connected. Since it is connected between gate and source terminal, this is VGS, voltage between gate and source. Same way drain terminal, ये वाला line, and source terminal, in between these drain and source, one more voltage is connected. Since it is between drain and source, it is, the notation is VDS. Okay. As far as the operation is concerned, first case, we will consider different cases. First case, if VGS is equals to 0, याद रख लो VGS मतलब the voltage provided between gate and source. तो ये voltage अगर 0 है तो this channel will not be formed and drain current will be 0. Next, second case, if VGS is positive, मतलब ये जो voltage है यहाँ पे हम लोग कुछ positive voltage apply करेंगे. अब देखो, recall the things what I explained you while teaching the construction of this E MOSFET, N channel E MOSFET. We are using P type of substrate. P type of substrate means holes are majority carriers, electrons are minority carriers. Means number of electrons are less compared to number of holes. अब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं हम लोग गेट टर्मिनल को. तो P substrate में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons will try to get attracted towards gate terminal, whereas whatever number of poles are there, they will get repelled, क्योंकि यहाँ पे गेट को पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, these are again positive charges, so they will get repelled, they will start moving away from the gate terminal, whereas electrons which are having negative charges will try to move towards gate terminal, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं. Now as you go on increasing this VGS, then this number of electrons which are moving towards gate terminal will go on increasing. Due to this, one type of channel is created near to the SiO2 layer. This is SiO2 layer. तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मूव करेंगे इस साइड में, वैसे एक चैनल तैयार होगा. This channel is called induced channel because this is the channel created due to movement of electrons towards gate terminal, rather towards VGS. This channel will join these two N type of dopant material and the drain current ID starts flowing. ये जो वोल्टेज है, जैसे मैंने बताया, VGS जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे the channel will be formed and the conduction of drain current will start. This particular voltage is called threshold voltage. तो याद कैसे रखना है? If VGS is greater than threshold voltage, that is VT. Actually threshold voltage is VT, but this is for N channel E MOSFET, so notation is VTN. तो याद कैसे रखना है? If VGS is greater than VTN, then the channel will be formed and conduction of drain current start taking place. Now the third case. In the third case, we'll keep VGS constant and will go on increasing VDS. इसका क्या मतलब है? Refer the same diagram, सिर्फ इसमें मैंने change किया. I will explain what changes I have made. VGS, that is gate to source voltage, ये constant रखेंगे
and we'll go on increasing VDS. VDS is the voltage applied between drain and source terminal. If you go on increasing this VDS, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इट इज कनेक्टेड टू ड्रेन, तो जैसे ये वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज तो ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कंपेयर टू द पॉजिटिव वोल्टेज विच इज अप्लाइड एट गेट टर्मिनल. यहां पे भी ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे भी पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है. बट इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग दिस VDS, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ड्रेन टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द पॉजिटिव वोल्टेज विच इज अवेलेबल एट गेट टर्मिनल, बिकॉज वी आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग दिस VDS. So what will be the end effect? Due to this, the number of electrons which were earlier moving towards gate terminal will go on reducing. मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे टुवर्ड्स गेट टर्मिनल, वो कम होते जाएंगे एंड यू विल गेट द रीजन लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड पिंच ऑफ रीजन. यहां पे इसका क्या मतलब है? इट इंडिकेट्स दैट द विड्थ ऑफ द चैनल व्हिच वाज क्रिएटेड बिटवीन दिस टू एंड रीजन्स gets reduced, but it will go on reducing only up to the certain limit. मतलब एक कंडीशन तक, जिसको बोलते हैं पिंच ऑफ कंडीशन, एक कंडीशन तक ही ये कम होते जाएंगे. उसके बाद द ड्रेन करंट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन. सो देयर आर 3 कंडीशंस टू समराइज इट. First, if VGS is 0, drain current is 0. Second, if VGS is positive and if you go on increasing VGS, then after getting increased VGS, then threshold voltage, drain current starts flowing due to formation of the channel between these two end regions. Third, if you keep VGS constant and if you go on increasing VDS, then a pinch off condition is obtained. मतलब number of electrons moving towards gate terminal will get reduced, width of the channel will be reduced, but it will limit the drain current to a certain constant level, that is called saturation region. The next part is transfer characteristics. From the exam point of view, you may expect the question, draw the transfer characteristics and drain characteristics फॉर एन चैनल ई मॉसफेट. अब देखो, सिर्फ आप लोगों को ग्राफ याद रखना है. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट द रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन इफ यू नो द ग्राफ. बेसिकली इट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज द ग्राफ ऑफ आईडी. आईडी मतलब ड्रेन करंट विच इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर्स वर्सेस VGS. VGS is voltage connected between gate and source terminal. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया while studying the operation of this MOSFET. As you go on increasing, second case I am talking about, as you go on increasing VGS, एक particular voltage के बाद जो voltage है threshold voltage, after one particular voltage the channel is formed and drain current starts flowing. Same thing we have shown in this diagram. एक particular voltage है VTN, this is the zero value, एक VTN. यहाँ तक whatever value of VGS is there, ID that is drain current is 0. Once the value of VGS reaches to VTN, VTN is threshold voltage, then drain current starts increasing. अब इस टाइप का जो ग्राफ होता है, this is called exponential graph. So you will have to write this. Once the VGS becomes greater than VTN, the drain current starts flowing in the channel and it increases exponentially with respect to VGS. अगर ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, देन वी वुड हैव रिटन इट इज लीनियर रिलेशनशिप. प्रेजेंटली इट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. नाउ देयर इज वन फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला गिव्स द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट इन टर्म्स ऑफ VGS एंड VTN. हियर K इज कांस्टेंट. अगर हम लोग एन टाइप एन चैनल मॉसफेट की बात कर रहे हैं, सो इट कैन बी डिनोटेड बाय KN in the bracket VGS minus VTN bracket square. So this is about the transfer characteristics of N channel E MOSFET. Next important graph is drain characteristics. It is the graph of drain current versus VDS. VDS मतलब ये voltage. This voltage is the voltage between drain and source terminal. हम लोगों ने 3 cases discuss किए. The third case was keep VGS constant and go on increasing VDS.
जैसे जैसे हम लोग VDS इंक्रीज करते जाएंगे, एक पर्टिकुलर रीजन आएगा दैट इज कॉल्ड पिंच ऑफ रीजन इन विच द ड्रेन करंट रिमेन्स कांस्टेंट. अब ये डायग्राम ग्राफ मैंने 3 अलग अलग VGS के लिए ड्रॉ किया है, VGS1, VGS2, VGS3. We have already discussed VGS is the voltage between gate and source terminal. Now this particular region where VGS is less than VTN is called cutoff region. मतलब इस region में no drain current is flowing, so drain current ID is equals to 0 in the cutoff region. Next region is non saturation region. मतलब ये जो dotted line से मैंने एक लाइन बनाया है, इससे पहले का रीजन राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज नॉन सैचुरेटेड रीजन, एंड आफ्टर दिस पॉइंट वी आर गेटिंग अ सैचुरेटेड रीजन. जैसे देखो कोई भी केस कंसीडर कर लो, लेट अस टॉक अबाउट VGS. मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज है दैट इज अप्लाइड बिटवीन गेट टू सोर्स टर्मिनल. So initially as VDS goes on increasing, I'm talking about the first graph, as this VDS goes on increasing, the current starts increasing in the exponential manner. We have already discussed this concept. एक particular condition के बाद the current remains constant. Whenever the current remains constant, it is called saturation region. ये जो रीजन है यहाँ पे द करंट इज गेटिंग एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग इज नॉन सैचुरेटेड रीजन. अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, यहां तक इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड ओहेमिक रीजन. देन व्हाई द कर्व बेंड्स, यहां पे बेंडिंग है. द कर्व बेंड्स बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ चैनल, जो चैनल तैयार हुआ है बिटवीन टू एंड रीजन्स, will go on increasing, because of which bending of curve takes place. Same technique is applicable for second graph as well as third graph. तो मैंने एक dotted line join किया है. Inside this dotted line, whatever region is there, that is referred as ohmic region. So in the ohmic region, the drain current increases with respect to VDS. मतलब जैसे जैसे हम लोग VDS increase करेंगे, likewise the drain current is increased. This is non-saturated region, and this straight line part is called ohmic region. This ohmic region is available in each curve. Okay. Now in the ohmic region, it is also called voltage variable resistance. मतलब MOSFET is operating as voltage variable resistance as the drain current is continuously changing with respect to VDS. And it is also said that in this region the MOSFET is acting as a closed switch. So this is about the drain characteristics of N-channel E MOSFET. Dear students, that's it for today's session. So thanks a lot for watching this video.